Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtake. Hare Krishna. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam 3, Chapter 1, text number 37 and 38, questions by Vidura. Kim va ghrita gheshva mratyamarsham bhishmo hiva dirghatamam vyamuchyata yasyang patam ranpurna sehe margam gadayascharto vichitram. Kim, where, va, either, krit, performed, ageshu, unto the sinners, agam, anger, ati amarshi, unconquerable, bhima, bhim, ahivat, like a cobra, dirghataman, long cherished, yamuchat, has released, yasya, whose, agrihipatam, putting on the steps, ranabhu, the field of battle, na, could not, sehe, tolerate, margam, the path, gadaya, by the clubs, charta, playing, vichitram, wonderful. So, translation and purport by Srila Prabhupada. Vidura is asking to Uddhava, please tell me whether the unconquerable Bhim, who is like a cobra, has released his long cherished anger upon the sinners. The field of battle could not tolerate even the wonderful playing of his club when he stepped on the path. Purport. Vidura knew the strength of Bhim. Whenever Bhima was on the battlefield, his steps on the path and the wonderful playing of his club were unbearable for the enemy. Powerful Bhima did not take steps against the son of Dhritarashtra for a long time. Vidura's inquiry was whether he had yet released his anger, which was like that of a suffering cobra. When a cobra releases its venom after long cherished anger, its victim cannot survive. This was the text number 37. Now 38. Kaschid sodharat yutapanam gandiva vadhan wo paratari raste alakchito yacharkota gudo maya kirato grisastutosha. Translation. Please tell me whether Arjuna, whose bow bears the name Gandhi and who is always famous almost amongst the chariot warrior for vanquishing his enemies, is doing well. He once satisfied Lord Shiva by covering him with arrows when Shiva came as an unidentified false hunter. Lord Shiva tested Arjuna's strength by picking a quarrel with him over a hunted boar. He confronted Arjuna in the false dress of a hunter, and Arjuna covered him with arrows until Lord Shiva was satisfied with Arjuna's fighting. He offered Arjuna the Pashupat weapon and blessed him. Here, Vidura inquired about the great warrior well-being. Hare Krishna. So, third canto we are reading here. Usually, there may be a question. Vidura, he already left the kingdom and now he's visiting different pilgrimages. Now you see, when we go to Vrindavan, usually devotees tell us, now you're at Vrindavan, don't think anything material.
Now Vidura, he is visiting different pilgrimages. And why he is asking about Bhima or Arjuna or about all these people? Is he still attached? The question may arise. Why he is asking? We consider Vidura as a very great soul, incarnation of Dharmaraj. And why he is asking all these things? Practically, all these things are material. You are at the place of, you are at the pilgrimage to think about Krishna, chant his holy name, hear from the associate of the sadhus. And before that, the question comes that why the Mahabharat, this Yuddha was fought. क्यों लड़ा गया महाभारत का? लड़ाई नहीं जाना था. And who is responsible for this fight? Is Yudhishthira responsible, or Bhima is responsible, or Draupadi is responsible, or Duryodhana is responsible, or Dhritarashtra is responsible? Who is responsible for this fight? Usually this happens in our life also. If someone says something wrong to us, or something happened wrong with us, so usually our question is, why this happened with me? Why I? बहुत कई बार भक्त लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रभु जी मतलब क्यों? Because they have expectation in the devotee community that in devotee community devotees should not deal like this, so they have these kind of expectation. But you see in this fighting, these two slokas, basically everyone is devotee because they are at the time of Krishna, and all these things are happening. Bhishma is Mahabhagavat, Yudhishthira, he is also a great soul, and the fighting is going on between two Mahabhagavats, two great souls. So if this happens in our society, this happens in devotee community, we should not be disturbed. No. Then how to accept it? Accepting as a Krishna's desire. This is very important. Why? Because if you'll see in Mahabharata, why Yudhishthira was involved in this gambling match? Because that was decided by the destiny. Although he has no desire to go for this gambling match, still forcefully he has to go. The thing was, what he has decided that I will always follow the path of dharma. And Yudhishthira was following the path of dharma because he has taken a vow. If my superiors tell me to follow something, I will not neglect them. I will follow them because Dhritarashtra has invited Yudhishthira, that's why he went. But before that, Yudhishthira was aware for that once Narad Muni and the other times Vyasdev has already told Yudhishthira that Yudhishthira, you cannot enjoy this kingdom for much time. Bhima and Arjuna will become an instrument, and they will be the cause of destroying all the Kuru dynasty. This is already non-factor for Yudhishthira, and the same thing has been told by Narad also. Everyone knows that Draupadi, she got birth through Yagna, and the objective of Draupadi was to killing all the Kshatriyas. So you see, all the factors are collected, and now there's a big fight of Mahabharata, and this is because Vidura left the place due to the spicing words of Duryodhana. Now, who is responsible for that? So the ultimate thing is Krishna's desire. What we should do in that situation, we should try to follow the dharma. Even recently, one incident happened. One devotee was preaching at some place, and the local devotees, they just vanished him from that project. Now, what this devotee should do? He should accept the desire of Krishna. Okay, that's Krishna's desire. There are two options you have. Either you fight for that, or you accept it as the Krishna's desire. Maybe Krishna has some other plan. What we should do? We should follow the path of dharma. What the etiquette says, what the Vaishnava principle says, we should follow those principles and follow the path of dharma, and whatever comes, accept it. So face the consequences.
And we can see even in Mahabharata, Draupadi's 5 sons were killed by Ashwatthama. But when this Ashwatthama came in front of Draupadi, he was tied by the Arjuna. Krishna was standing near to Ashwatthama. And Arjuna told, now you tell what to do this culprit. And what Draupadi replied, see the nature of a lady, his motherly nature. She told Krapi, wife of Dronacharya, she is alive. She doesn't become Sati because Ashwatthama is here. So my 5 sons are died, but I don't want that you should kill this Brahmana. Ultimately, he is the son of our Guru. So Draupadi is following his dharma. Although there is Ashwatthama should be punished, but as a lady, as a mother, she is following her dharma. And even Bhishma Pitama is exclaimed, how this can happen with Pandavas, the way, the kind of suffering they have in their life. Their father died when they were very small. The mother was victim of politics. And so many, you know all these stories, how they became victim. So this can happen in our life also. What is practical application of all these situations? We have to surrender to Krishna. We have to depend on Krishna. Because everything is not in our control. Everything is not in our control. So we have to surrender to Krishna. The second thing we see, the qualities of Arjuna and Bhima that has been described here by Vidura. So basically both are Kshatriyas. So that's why you will see the qualities which Vidura is describing here about the Bhima, about the Arjuna. He is not telling, oh, they were very humble, good devotee of Lord and very tolerant, not like that. He is describing the qualities which is associated with their karma. They were the Kshatriyas. And he is describing the Kshatriya qualities of Bhima and Arjuna. So that's the nature of Kshatriya. We know Veer Bhogyate Vasundhara. There are so many fights. If you read the history, you will find our books are filled with fighting. This fight, first fight, second fight, everyone was fighting. Because if there is monarchy, there is kingdom, then usually the nature was, if Kshatriyas, they want something, they will not go to mall and they will not ask, kya bhav chal raha hai bhaiya बैगन, kya bhav chal raha hai apple? No. वो अपने घर बुला लेंगे, अपने घर लेके जाएंगे. So if they want something, वो छीन लेंगे उस चीज को. That is the nature of Kshatriya. So Veer Bhogyate Vasundhara, and they give protection. And for that protection, other people, they collect tax for that. Now in democracy, there is no place for Kshatriyas. So these Kshatriyas are full of passion. Like Brahmanas, they are full of, like completely Brahmanas are situated in the mode of goodness. Kshatriyas are completely situated in the mode of passion. Even in animals, we can see, like lion is considered as a Kshatriya amongst the animals. Because lion is completely situated in passion. While cow is considered as animal in mode of goodness. While other animals like camel, dog, hog, they are considered in the mode of ignorance. So even animals are considered as goodness, passion, and ignorance. Human beings are also same. So Kshatriyas are considered as a situated in the mode of passion. And in that passion, their nature is to fight, because whatever they want, they will fight for that. Like you can see the example of Bhishma Dev. And there was this Swambar
for the 3 daughters of Kasiraj. So Kasiraj doesn't invite Kurus because he thought Dhritarashtra, he is blind. No, it was Chitrangad and Vichitraveer. So he did not invite these Kurus. So what Bhishma Pitama did, he went to Kasiraj's assembly and he challenged, I have younger brother and I find that these are good girl for my brother. So I'm taking them to my kingdom. Now, if anyone wants to stop me, I'm ready for fighting. So this is the nature of Kshatriya. And then all the assembly came and they are fighting with Bhishma Pitama. Now, how one person can fight with thousands of people? Yeah, like Varun Prabhu can fight with 1,000 ants. If there are 1,000 ants on floor, he can easily fight with them. Just he has to put his shoes on those ants and all the ants will die. In the same way, these Bhishma Pitama, these are great warriors. They have power of like Bhima, Bhishma. They have power of thousands and thousands of people. They can fight with not only with the human being, they can fight with thousands of elephants. Now, what to talk about the simple human being? So this power, this kind of heroism is very rare. So how he accepted, how he took those 3 daughters of Kasi Naresh to his younger brother. So this is the same nature has been described here by Vidura. So Bhagavad Gita discusses about the nature of a Kshatriya, qualities of a Kshatriya, heroism, power, Sauryam, Tejo, Dhartirdaksham, Yuddhe Chapya Palayanam, Danam Ishvara Bhavascha, Chatram Karma Swabhavam. Naturally, Kshatriyas, they are leader by nature. At the same time, they are very generous also. We can find many stories in the history that they are very generous for the donations. You go to Vrindavan, all the temples, they have been built by Kshatriyas, by the kings. So they are very generous. You go to South India, very big temple. Who has constructed those temples? Kshatriyas has constructed those temples. Kings has constructed those temples. So they are very generous in that. But Ishwara Bhavasya, that's the nature of Kshatriya. Ishwara Bhavasya means controlling mentality. That's why when Krishna went to the assembly of Dhritarashtra, so he was asking for 5 villages for 5 Pandavas. Why? Ishwara Bhavasya. Because they have this nature to control. If Kshatriyas is not given the power to control at some place, at least some place they need to control, because that's their nature. Like Brahmanas, they have this nature, if they don't have clean place, they don't have proper place for their sadhana, for reading for their scriptures, then they can be agitated. The same with the Kshatriyas, if they don't have place to rule, they will be agitated. So, resourcefulness. Recently, I was in Brajmandal Parikrama. So, 1,700 devotees were there in the 1 month Parikrama, Brajmandal. And every day, they have, I think, 40 for more than 100 tents. More than 100 tents they have. And every day, they were removing, they were setting tents, removing tents and setting tents. So, one devotee was telling me, Prabhu, just we are walking. Now you see, when these Kshatriyas were fighting, like some Marathas, they are in Maharashtra side and they are fighting in the Panipat, in the North India. So many resources are needed. So many resources are needed. Tents are needed. Then for them, foodstuffs are needed. All those things are needed. Apart from that, like in Brajmandal, we are just walking. Everything was arranged. But for them, they have to fight also. And they need movable hospital also, because no doubt when there's fighting, someone will die, someone will become injured. How are they managing? So that's the nature of Kshatriya. Resourcefulness. That's why administration, that's a like act of Kshatriyas. Usually we consider those who are in the administration, they have to be resourceful. If someone is running a temple,
He needs funds, he needs devotees, everything he needs. So resourcefulness. So person is known, person is identified due to his qualities, due to his characters. आप भी आपको भी भक्त लोग कभी आप सुनेंगे, अरे वो भक्त वो तो बहुत विनम्र हैं, अरे वो तो बहुत अच्छे साधक हैं, वो हाँ अरे वो प्रभु जी वो थोड़े से क्या एग्रेसिव हैं, थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं जल्दी, वो अरे वो बहुत अच्छे प्रचारक हैं। तो एक व्यक्ति उसके गुणों के कारण जाना जाता है। So that's why we should try to develop, like why I have discussed all these qualities of a Kshatriya. We are not Kshatriya here, we are Vaishnavas. We are not Kshatriyas, we are Vaishnavas. So we should try to develop those Vaishnava qualities when we are dealing the Vaishnava society. We should deal on the spiritual platform. Our society is a spiritual society, because we are coming from different backgrounds, so we have different upbringings, and due to those upbringings we have different natures. Still, like in a company, different people are coming from different courses, different backgrounds, but they have to follow whatever SOP they have in their company. The same way, maybe we are coming from different backgrounds, but to please Srila Prabhupada, to please spiritual master, to push this movement, maybe we have different nature. Sometimes devotee says, Prabhu, this is my nature, Prabhu, I cannot adjust this, blah, 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 this. No, we have to adjust. We have to adjust. So these are the qualities of a Kshatriya. The same way there are the qualities of a Vaishnava, and we should always try to develop those Vaishnava qualities and acting on the spiritual platform, behaving, dealing with those Vaishnava qualities. Then you will see the community will be always blissful. Dadati pratigrahanati guhyam akhyati prachati bhunkati bhojati cheva sadvidi priti lakshanam. So with good etiquettes, with beautiful heart, then everyone will be blissful around you. You also will be blissful, and around you, those who are there, they will be also blissful. In this purport, Bhima is compared with snakes. So usually snakes has two kind of bite. One bite which snakes use for his own protection. If snake is using, like somehow or by mistake someone put his leg on the snake, then he will bite in such a way that maybe person will not die. But if with this intention to kill someone, snakes bite, then the person will definitely die. So Bhim is compared here with the snake. Usually snakes, they are considered a representative of envious person. Srila Prabhupada narrates one incident that once in Gaudiya Mutt, there was one snake, and devotees killed that snake. And Bhakti Siddhant Maharaj was very pleased. He was laughing. So Prabhupada thought, how is it possible that he is such a great saint and he's laughing? This animal has died, this living entity has died, why he is laughing? And Prabhupada told, years after, I came across in the Bhāgavat that when the snakes are killed, then even the great saintly person, they become pleased. And Prabhupada was, like he was repenting, oh, why I doubted on my spiritual master. The same incidents happened with Bhakti Charu Swami also. Bhakti Charu Maharaj, once he was sitting in a room with Srila Prabhupada, and one book came. In that book, there has been written, writer A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, International Society for Krishna Consciousness. One word was missing there. That word was founder Acharya. And Prabhupada was so angry on that publisher or the editor. Where is the word founder Acharya? Where is the word founder Acharya? And Bhakti Charu Maharaj was thinking, why Prabhupada is so angry? Okay, this is only one word.
founder Acharya. If that is not there, what's the problem? Okay, no problem. Why Prabhupada was so, like, he was thinking that time, um, why he is thinking so much for his name, founder Acharya. But Maharaj writes in one book, later on, when he involved the management and all these things, after a few years, he could understand that that was not Prabhupada doing for himself, for a movement, for an institute. This is very important that the position of a founder Acharya must be fixed. The position of founder Acharya must be clear. Who is the founder Acharya? And Prabhupada, to protect this movement, he wants to make it clear that who is the founder Acharya. That's why in future there will be no fighting for the institute. And that was what Prabhupada's desire. So the point is, these are the pure devotees. Before accepting Guru, you can check them. But once you have accepted Guru, keep full faith on your spiritual master. Otherwise, these pure devotees are like fire. Either you will become gold, or there are chances you will be burned out. So that's why this incidence of snakes, the life of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, teaches us then how we should keep full faith on spiritual master. Now in the second slokas, there is reciprocation between Arjuna and Lord Shiva. Now you see, how is this reciprocation? This reciprocation is not like that Arjuna, Lord Shiva is coming and Arjuna is offering one seat for Lord Shiva. Oh, please, Lord Shiva, and then washing his feet. Not that kind of reciprocation is there. Because he is in the, like, performing the duty of a Kshatriya. So reciprocation between them is in the form of Kshatriya. So this reciprocation is very important in our life also. Just few days back, I was giving a lecture on art of parenting, and I came across a very wonderful lesson. There were two husband and wife. So some conflict was going on between them. And the reason was there was not proper communication. They were not understanding feelings of each other, that we say love languages. How is that? Like this devotee, he was going to temple. He was taking care all the family responsibilities very nicely. When he has time, he will go to temple, he will cook there, he will do service in Food for Life program. But the wife of this devotee was thinking that he is not spending quality time with us. Although he was fulfilling all the responsibilities, at the same time he is doing devotional service, also service in temple. And so maybe somehow they could understand. And then what this devotee started, he was taking his wife when he was going to market. He will take his wife with him, and together they will purchase some vegetable for the temple also, for their house also. In that service, they have good quality time with each other. Now wife was thinking, what I can do for my husband. So her husband, he was always talking, when I was child, when I was staying with my mother used to iron my clothes in such a way. So that wife, she went to her like her husband's house, and she learned it how her mother was ironing her clothes. She was putting some itr in that, and then she was ironing. She learned it, and then she came back and she ironed the shirt of her husband in the same way. I'm talking about the reciprocation. And she doesn't told anything, but she was just waiting her husband observed or not. And when he came back and he told, oh, who ironed my shirt? It was like my mother was doing before. So then she told, I went to your mother's house and I learned everything. See,
For these two people, two different activities. Although he was fulfilling his responsibilities properly, but for her wife, the love language was quality time spending. So she desired reciprocation in that way. While for the husband, that reciprocation was in some other way. So when we know this reciprocation with each other, because like after a few days, every month I got news, this friend got divorced, this guy, even he got divorced. Now divorce has become very common in India also. So this relationship is very important, and that is how Arjuna is reciprocating with Lord Shiva as per his qualities, because Lord Shiva came there to test Arjuna. So this reciprocation is very important. So we should also try to know the nature of each other, nature of devotees. Someone got married in some family, then if we know my husband has this kind of nature, my father-in-law has this kind of nature, my mother-in-law has this kind of nature. So if we know the nature of different people, can we not adjust with them? And the same way, if husband knows my daughter has, my wife has this kind of nature, she wants this thing. So why we cannot reciprocate with them in such a way? Then you will see relationship will flourish. Otherwise, it's becoming difficult day by day. So although Arjuna was fighting with Lord Shiva and he could please Lord Shiva, but we see the same Arjuna when Lord Krishna told him to take these wives to Mathura, he was defeated by simple these Adivasis. So same Arjuna, same Gandiv, but Krishna was not there. So same Arjuna could please by his fighting to Lord Shiva, and same Arjuna was defeated by few Adivasis, jungle people. How is that? So that's the mercy of Krishna. So in our life also, maybe someone can become very big preacher, someone can become very famous personality, someone can be very knowledgeable, someone can be very good in nature, very good in, like, if we got all these divine qualities, still we should not become proud for that what we learn here. And whatever we are getting just by the mercy of our acharyas. We are nothing practically. We are nothing. What we are getting by the mercy of our acharyas, by the mercy of Srila Prabhupada, the spiritual master. So we should always keep that in our mind. And if we keep that in our mind, then we will be never egoistic. You'll never egoistic. We can balance, we can manage our ego, and we can even free from ego. So this is how we see these two slokas, that how we can deal with enviousness, how we can deal with ego, different kind of natures, and reciprocation as per those natures, accepting the Krishna's desire, following the path of dharma, nature of a Kshatriya, developing Vaishnava qualities, and behaving, acting on a spiritual platform with the devotees. So these are few teachings from these two verses which I heard from seniors, which I could find out. So I thought I can share with all of you. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for a wonderful class. If any devotee has a question, you can ask me. You can type in the comment box, or you can unmute your mic and ask. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Then with pranam. Hare Krishna, Mataji. Prabhuji, like एक comparison, मतलब कुछ भी हो life में आप कितना भी avoid करो, एक sense of comparison वो आ ही जाता है
वो मतलब कि किसी भी बात पूछ सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मटेरियल की, वो उसके पास इतना धन क्यों है, वो इतना ऊंचा है, छोटी छोटी चीजों में। और वो कंपैरिजन इज मेनली द ईर्ष्या। ईर्ष्या से ही शायद कंपैरिजन उत्पन्न होता है। तो जब ऐसे कुछ भाव आ रहे हो तो उससे भी क्या करना चाहिए? डीलिंग्स के 4 स्तर बताए गए हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं गुणों में। हमेशा मान लीजिए मैं देखूं कि हमारे गुरु महाराज को इतना ऐश्वर्य मिल रहा है, या हमारे काउंसलर हमारे सीनियर्स हैं उनको इतना ऐश्वर्य मिल रहा है, और मैं उनके लिए एनवियस हो जाऊं, तो मैं हमेशा जलता रहूंगा। तो जो हमसे सीनियर्स हैं हमेशा उनके गुणों का दर्शन करना चाहिए। जो हमारे बराबरी वाले लोग हैं उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली एनवियसनेस हमारी जो होती है दैट इज विद द इक्वल्स। एनवियसनेस जो आती है जूनियर के लिए, आपको बहुत कम एनवियसनेस आएगी, आपको एनवियसनेस आती है इक्वल्स के लिए, बिकॉज वी आर ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म। सो चांसेस है कि कोई हम में से आगे बढ़ सकता है। व्हेन वी आर गुड फ्रेंड, तो आप देखेंगे कि हम एनवियस नहीं होते हैं। तो प्रयास करिए जो आपके इक्वल्स हैं उनसे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप डेवलप करने का स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे। और जो हमसे जूनियर होते हैं उनके लिए करुणा का भाव रखना चाहिए, और जो ईर्ष्यालु हैं उनको छोड़ देना चाहिए, उनको कोई एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उनको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। तो ये एक चीज है। और दूसरा एनवियसनेस, हम इसी एनवियसनेस के चलते तो यहाँ है, तो ये तो एक चीज डीलिंग हो गई। दूसरा क्या करें हम? दूसरा हम करें कि जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एनवियसनेस आ रही है, तो हमें उसके अच्छे गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करें कि हाँ देखो प्रभु जी में तो माता जी तो ये इतना अच्छा गाते हैं, या इतना अच्छा क्लास देती हैं, या इतना अच्छा उनका भक्तों को सेवा का भाव है। आएगा, क्योंकि हम अपवित्र है ना, हम प्योर डिवोटी नहीं बने अभी, इसलिए ये चीजें आएंगी। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि उनसे कैसे डील करना है। तो यदि हम उनके गुणों को दर्शन करने का प्रयास करेंगे, उनको सर्व करने का प्रयास करेंगे, असिस्ट करने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे 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 जिस भक्त के प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या है वो ईर्ष्या जाती रहेगी। सो बहुत अच्छे मित्र बन के और उनको ग्लोरीफाई करके, उनको सर्व करके हम ये ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। कठिन है लेकिन हो सकते हैं। और दूसरा ये मटेरियल नेचर की ओर देखना चाहिए कि हम किस चीज के लिए ईर्ष्यालु हो रहे हैं, वो भी तो एक बार विचार करना चाहिए कि अल्टीमेटली तो मटेरियल चीजें तो पेरिश नष्ट होने वाली हैं, तो हम भौतिक चीजों के लिए क्यों किसी के प्रति ईर्ष्यालु हो। और दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जानता हूँ इस्कॉन में ऐसे ऐसे स्कॉलर हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। आप लोग भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता, इतने बड़े बड़े स्कॉलर। और सामान्य भक्त जो बहुत नॉलेज में बड़े छड़े नहीं है, लेकिन उनको दे आर लाइक आइकॉन, दे आर आइकॉन सोशल मीडिया। प्रारब्ध, इसको हम भूल नहीं सकते हैं प्रारब्ध को। आप देखिए सन्यासी बन गए हमारे इस्कॉन के अनेक महाराज लोग, वो इतना ट्रेवल कर रहे हैं जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन ट्रेवल नहीं कर पा रहे। दे आर सन्यासी, स्टिल दे आर ट्रेवलिंग इन सच अ वे। तो प्रारब्ध व्यक्ति का इस प्रकार से है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कोई हमसे बेहतर है, कोई अच्छा कर रहा है, तो ये हमारा प्रारब्ध है। हम अपना प्रयास कर लें, और हमें कोई चीजें नहीं भी मिलती है तो उसको प्रारब्ध के रूप में स्वीकार करें। एनवियस होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, अगर इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर दूं कि आप एनवियस नहीं है, लेकिन आपको पता है सर्टेन पीपल, आप उनसे कितना भी अच्छी डीलिंग कर रहे हो, बट they have that sense of envious for with you. So then how to deal with such people? And second question is, मतलब कि मैं तो अभी अपने आप को भक्त भी नहीं मानती, भी तो मैं जस्ट सीढ़ी वो प्रारंभ की है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी सीखती हूँ उसको मैं करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आई विल नॉट नेम, और आई विल नॉट, इट्स नॉट दैट कि मैं कुछ कंप्लेंट कर रही हूँ, बट इवन इन इस्कॉन टेम्पल जो हमारे एरिया में है, I've seen the very senior devotees, they keep on comparing themselves with the other senior devotee of the same premises, और फिर सेशंस में वो एक दूसरे की वो करते हैं। तो ऐसे समय में मतलब समझ नहीं आती कि उनकी वो बात सुनी जाए या क्विट कर दिया जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि ये सब चीजें सुनना भी एक तरह से ठीक नहीं है। तो ऐसे में इस चीज को कैसे डील किया जाए, उसमें अपने मन को क्या समझाया जाए कि ठीक है कोई बात नहीं, सीनियर है, अगर इस तरह की बात करें कुछ रीजन होगा ऐसे करने का। पहला ये है कि अपने का दूसरे हमारे प्रति एनवियस हैं, तो दूसरे व्यक्ति कैसे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
हम कैसे उस स्थिति में बिहेव कर सकते हैं, हम कैसे उन सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वहां कैसे बिहेव करना है, वो हमारे हाथ में है। तो यदि कोई हमारे प्रति ईर्ष्यालु है तो हम ईर्ष्या रहित होके उनसे रिस्पॉन्ड करें। और दूसरा, यदि हमारी बात सुनते थोड़े से, क्योंकि प्योर होंगे, जब शुद्धिकरण होगा, भक्ति में लगेंगे, तो निश्चित रूप से ये ईर्ष्या तभी जाएगी, अदरवाइज तो नहीं जाएगी, बहुत कठिन है। तो वो हम करें, हम अपने रिस्पॉन्स को, अपने बिहेवियर को उस समय कर सकते, दूसरे के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसको हेल्प कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा आपने बताया डिवोटीज के लिए, तो इसके विषय में तो मैं यही कहूंगा कि वैष्णवी क्रिया मुद्रा विगे ना बुझाए, कि वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को समझना तो बहुत कठिन है। So usually the Vaishnava etiquette says if there is some issue with the seniors, the way to, तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने का तरीका है कि go to some superiors which are superiors to them also। तो फिर उसमें क्या है कि उनको कुछ करेक्शन मिल सकता है। जैसे मान लो मैं जूनियर हूँ किसी भक्त से, और मैं वो प्रभु जी करेक्शन दूंगा, तो वो उसको अपराध के रूप में लेंगे और सुधार करने वाले भी नहीं है, he will not accept it। तो ऐसे कम्युनिटी में, यदि हम कहीं कम्युनिटी में हैं, क्योंकि सबके सीनियर्स होते हैं, मतलब वरुण प्रभु कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनके सीनियर्स हैं, मुझसे कुछ गड़बड़ी होती तो हमारे सीनियर्स हैं। तो यदि कुछ ऐसे विचार हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ विचार है और ये कम्युनिटी में ये चीजें कुछ डिस्टर्ब कर सकती हैं या अच्छे एटीट्यूड को डिस्टर्ब करेंगे, अच्छा एटीट्यूड भक्तों का नहीं रहेगा, इसमें यदि कुछ ऐसा लगता है, सो गो टू दियर सुपीरियर्स एंड हम्बली हम कह सकते हैं प्रभु जी ऐसे ऐसे घटना एग्जैक्टली बता सकते हैं, प्रभु ऐसे ऐसे हुआ और इस तरीके से हो रहा है, तो मैं सोचा आपको एक बार बताएं प्रभु जी, हमारा फेथ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, देन दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो बजाय हम कुछ कहें इसके, उनके सीनियर्स के पास जाएंगे तो हमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ वो जो जिनसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हम सभी तो सीख रहे हैं, हम तो सब शुद्ध नहीं हुए अभी, हम सभी सीख रहे हैं, तो उनको भी करेक्शन मिले, दोनों काम हो जाएंगे, हमारा फेथ भी प्रोटेक्ट होगा और उनको करेक्शन ही मिल जाएगा, तो वो भी सही तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द वैष्णव वे टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हेन वी फाइंड सम फॉल्ट। वैसे तो हम प्रयास ना करें, लेकिन ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, गलती निकालते हैं, गलती हो रही तो दिख रही है, तो यदि कुछ मिल भी जाती गलती, तो दिस इज द वे हाउ वी कैन डील विदाउट एनी ऑफेंस। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये तो दूसरे के बारे में हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत, मेरा कुछ भी हो, मेरे को ऐसा मतलब होता है कि जेलसी करते हैं और मेरा काफी सामान भी निकल जाता है। तो उसमें ऐसा होता है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, एक चीज को निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उससे हमारा जितना प्लान होता है सब खत्म हो जाता है। ये थोड़ी कि हम मेटेरियलिस्टिक चीज के लिए हमेशा भागे रहें, उससे लगता है कि हम मेटेरियलिस्टिक हैं, तो जबकि हमें जितना भी टाइम हो अपना भगवान पे लगाना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कहते हैं भूल जाती है, बुढ़ी हो गई है, तो ये चीज बहुत गलत है ना, टॉर्चर करने वाली बात है, इसको कैसे अवॉइड किया जाए? हाँ, ये तो टॉपिक निकला है ना प्रभु जी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अदरवाइज थोड़ा शर्म भी आती है ऐसा कहने में, देखिए, इसलिए हमें क्योंकि वो लेने वाला, सामान लेने वाला बोलता है ब्लेम करते हैं, तो मैंने अब बोलना भी छोड़ दिया है, ब्लेम करना चलो इनडायरेक्ट वे में ब्लेम हो गया, वो भी एक वो गलत है, तो मैंने बोलना छोड़ दिया अब, लेकिन अंदर से हार्ट में तो पिंच करता है ना। इसलिए हमें एक अच्छा प्रचार करने की आवश्यकता है ताकि लोग सेंसिटिव बने। ये चीज जो आज हो सकता है हम युवा हैं, कल हम भी तो वृद्ध हो जाएंगे, इसलिए वैदिक संस्कृति में कहते हैं कि हमें वृद्ध जो हैं, बच्चे हैं, माता हैं, गौ माता है और ब्राह्मण, पांच लोगों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके संरक्षण की बात शास्त्रों में भागवत। तो अब सामने वाले को वही चीज आती है कि सामने वाले को कैसे समझाएं, वो उसका कल्चर है, उसकी अपब्रिंगिंग है कि उनको ये बताया नहीं गया है कि किस व्यक्ति से कैसे डील करना है। हाँ जी, हाँ जी। कई बार क्या होता है कि वो पर्टिकुलर, जैसे अब अमेरिका, कोई यहाँ अमेरिका को तो नहीं बैठा है, यूएस, हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं, वासुदेव प्रभु, तो दे आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो कह देते हैं, लेकिन हम लोग क्या है 10 बार सोचते हैं कि भाई इसको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, विचार करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सेंसिटिविटी हमें डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू
इफ वी आर गोइंग थ्रू सच, मतलब हम कुछ ऐसी समस्याओं से जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम लोगों को अवेयर करना शुरू कर सकते हैं। हम लोगों को कोई दूसरा है, मान लो कोई जवान है या कोई दूसरा व्यक्ति है, तो उसको हम धीरे धीरे हमें अवेयरनेस लानी चाहिए इस चीज के लिए कि हम उनको सिखाएं, एक्सेप्ट करें। और यदि इसका एक तरीका ये होता है, व्हेन वी फील हर्ट, जब हमें कोई किसी, मान लो वरुण ने कुछ कहा, अरे धीर शांत प्रभु कितना बेकार लेक्चर दिया आपने, दिमाग खराब और इकट्ठा, तो वो ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है हमें खराब लगे थोड़ा सा। तो एक तरीका होता है हम्बल तरीका वो कमिट करने का, प्रभु जी हमें तो भगवान ने इतनी ऐसी शक्ति दिया, ऐसी बुद्धि दिया है, लेकिन हमने जो कहा है वो सब गुरु वैष्णवों से सुन के कहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो क्षमा करिए। तो उसमें क्या होता है कि हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल के हम एक मैसेज दे देते हैं कि प्रभु जी आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। तो जैसे कोई कह रहा है अरे बुढ़ी हो गई, भूल गया, ये इस तरीके से। तो एक तरीका होता है कि देखो भाई, उम्र है, सबकी ढलती है, बढ़ती उम्र, आप भी तो बूढ़े हो गए एक दिन, ये भी होंगे, आपके बच्चे आपसे ऐसा कहेंगे, कैसा लगेगा। तो एटलीस्ट हम एक हिंट दे देते हैं, समझदार होगा तो समझ जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल, कोई शास्त्र का सिद्धांत नहीं है, मैं बिहेवियर साइंस बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कई बार क्या होगा, जैसे हम 2 4 5 लोगों से मिलते हैं, और मोस्टली क्योंकि हमारे बहुत ऐसा ब्रॉड एरिया नहीं होता कि हम 10 50 100 लोग 200 लोगों से रोज डील कर रहे हैं, बेसिकली हमारे सर्कल में 5 10 लोग ही होते हैं। तो यदि हम एक बार कम्युनिकेट कर दें, थोड़ा सा सिंसियर है, थोड़ा सा होशियार बच्चा है, तो वो समझ जाएगा कि माता जी को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, तो नेक्स्ट टाइम से वो सावधानी रखेगा। तो इसमें क्या, हम भी पीसफुल रहेंगे और हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। तो ये आप टेक्निक अपना सकती हैं माता जी, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये पिछले क्वेश्चन से ही मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है। जैसे आप बोल रहे थे कि आप अपने सीनियर डिवोटीज के पास जाके जूनियर्स के बारे में बोल सकते हो कि वो आपके साथ बिहेवियर गलत कर रहे हैं, पर वो जो जूनियर हैं वो सीनियर्स वालों के सेक्रेटरी या कुछ मतलब ज्यादा नोन टू है या ज्यादा वो है, क्योंकि हम तो भी नए नए हैं, तो सीनियर्स भी कहाँ सुनते हैं। उनको तो फेथ होता है कि नहीं जी जो हमारे साथ है वो सही बोल रहा है। मैंने तो यही अभी तक ऑब्जर्व करा है। इसका क्या तरीका है? तो हमने तो बोलना ही छोड़ दिया, हमने तो कहा ठीक है प्रभु इच्छा, जो कर रहे करवा रहे करने वो, तो हम तो क्वाइट हो गए। पर एक जो इस्कॉन के प्रति हमारा जो समर्पण है कृष्णा जी के प्रति, या जब हम इसी किसी संस्था से जुड़े हैं उनके प्रति हमारा जो लगाव है वो थोड़ा कम हो जाता है, फेथ कम हो जाता है। फिर उसको डेवलप करते हैं, फिर जाते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम तो कृष्णा जी के लिए जा रहे हैं, काफी करते हैं। फिर दोबारा से अगर वैसा बिहेवियर होता है फिर हम थोड़ा डाउन हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी भक्ति पर भी असर पड़ता है, तो हम फिर भौतिकवाद की तरफ चले जाते हैं, फिर इधर जाते हैं। तो ऐसे कितना अपने मन को समझाएं, उनसे भी सीनियर्स के पास जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? जब मेंटरी नहीं सुनते तो क्या करें बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल तो रहे हैं हमने क्या करा है कि प्रभु हम जी, बिल्कुल जैसे सही बोला अगर इन्होंने। हमको बहुत सेवाएं मिलती थी तो हम अपनी सेवा कम कर देते हैं, और अगर नहीं होता तो हम बोलते हैं छोड़ो ना, घर पे ही कर लेते, नहीं जाते मंदिर। तो ऐसा बिहेवियर हमारे अंदर, ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं। तो वो कैसे अवॉइड करें, कैसे वो चीज करें? क्योंकि हमारी तो इच्छा है ना कि हमें सेवा मिले, हम मंदिर जाएं, क्योंकि हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना है। और जब तक हम डिवोटीज, आप सबका लेक्चर्स में ये होता है डिवोटी संग डिवोटी संग डिवोटी संग, तो कैसे करें? फिर हम जो सीनियर्स होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं उनके साथ ही उठते बैठते हैं, उनको अवॉइड कर देते हैं और सह लेते हैं, पर मन में एक कहीं से कोने में एक खटक सी एक आ जाती है, उसको कैसे दूर करें? देखो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करूंगा कि जैसे हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में भी हैं, मान लीजिए हमारे आश्रम में 20 लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि 20 के 20 भक्तों से हमारा बहुत मधुर संबंध है। मैं अपने जीवन से ही बताता हूँ आपको, 20 के 20 भक्तों से बहुत मधुर संबंध नहीं है, लेकिन खटास भी नहीं। खटास इन द सेंस क्या है कि हमारा वर्केबल रिलेशनशिप है। आइडियली यदि हम शुद्ध हैं तो हमारा सबसे अच्छा संबंध होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट प्योर। तो वो रिलेशनशिप कम से कम इस स्तर पे तो होना चाहिए कि हम मिलके एक साथ सेवा कर सकें, श्रील प्रभुपाद को केंद्र में रख के हम कार्य कर सकें, उतना होना चाहिए। लेकिन जो हम कहते हैं डीप इंटीमेट रिलेशनशिप, हमारा जो हृदय से हृदय जुड़ा होता है, वो तो मान लो आपकी कम्युनिटी में 500 लोग हैं या 400 लोग हैं, 200 300 लोग हैं, ऐसे 10 लोग ही होंगे
जिनका हृदय से हृदय जुड़ा है। तो आपको क्या करना है, जो 10 लोग हैं जिनसे आपका हृदय से हृदय जुड़ा हुआ है, यू शुड ट्राई टू एसोसिएट मोर एंड मोर विद देम। बहुत ज्यादा उन लोगों से संबंध रखना है, और हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि जैसे अब सोचो हम लोगों ने जीवन दिया है, किसी मंदिर में गए, पता चला रुकने की व्यवस्था नहीं हो रही, इतना लेटर यहाँ घूम रहा है, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा घूमने में चला जाता। तो कई बार ऐसा व्यक्ति को लग सकता है कि यार चल क्या रहा है, इस्कॉन मंदिर के हम फुल टाइम डिवोटी और इस्कॉन मंदिर में रुकने के लिए इतना परिश्रम हमें करना पड़ रहा है, या कभी प्रसाद में लाइन में इतना घंटे घंटे लग गए और ये टेम्पल प्रोटेक्ट नहीं कर, जो भी है। तो ऐसे मन में विचार आ सकता है कि संस्था है तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो हमें प्रयास करना है वो 5, वो 10 लोग, वो 15 लोगों को खोजने का जो हमारे हार्ट के, हमारे हृदय के करीब हैं। और जब ऐसी स्थितियां होंगी, क्योंकि सबसे हम एक एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मैं खुद देखूं तो कोई पर्टिकुलर सन्यासी, हमसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा, क्योंकि रहे साथ में रहे, हमारा मिलना जुलना रहा। कोई दूसरे उनसे वो मैं जानती नहीं, उसको रिलेशनशिप नहीं, लेकिन कोई खटास भी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मतलब पर्सनल रिलेशन वैसे तो वाणी के माध्यम से है। तो क्या करें हम, वो 8-10 भक्तों को आप अच्छे से नर्चर करिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करिए। और जो आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि इसको मैं फेवरेटिज्म कहता हूँ, आपने कहा कि वो उनकी सुनते नहीं है, चूंकि वो डोनेशन ज्यादा देते हैं, बड़ी कंपनी वाले हैं, तो उनकी बात सुनते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए ये जो मेंटरशिप हम जिसको कहते हैं, काउंसलर कहते हैं, तो काउंसलर इसलिए यूजुअली हमारा जो अनुभव रहा है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आता है, उसका हमेशा बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है, उसकी 10 गलती वो माफ कर देता है। कोई कितना बड़ा प्रचारक है, कितना बड़ा ज्ञानी है, उससे ज्यादा जो व्यक्ति जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आया, उसका उसके प्रति केयरिंग नेचर, अटैचमेंट ज्यादा होता है। तो हमें वो एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना होगा कि दिस इज द पर्सन, ये वो व्यक्ति है जिससे हम, जो ऑलवेज हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें नर्चर करेंगे, हमें हेल्प करेंगे, और उनसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और दूसरे जो भक्त हैं मंदिर में, दूसरे ब्रह्मचारी हैं, दूसरे काउंसलर्स हैं, गृहस्थास हैं, जो भी हैं, जिनसे नेचर हमारा मैच करता है, उनसे भी हम एटलीस्ट वर्केबल रिलेशनशिप तो रख ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या, क्योंकि कम्युनिटी में आप सोचो 500 के 500 लोगों से हमारी दोस्ती होगी, नहीं हो सकती। आश्रम में 20 के 20 ब्रह्मचारी से हमारा बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध होगा, नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो वो आपको 10-15 लोगों को, और एक जो आपके शिक्षा गुरु या काउंसलर या गाइड में जो भी कहें, उनसे आपको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा, कोई ऐसे हृदय में लगाने की आवश्यकता नहीं है कि ये भक्त ऐसे, हम किसी भक्त के लिए यहाँ नहीं आए, हम श्रील प्रभुपाद जी के लिए यहाँ पे आए, हम किसी भक्त के लिए नहीं आए हैं। हाँ, जो भक्त हमें लेके आया, वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर हिम, और वो भी हमें, आप देखेंगे, टेक केयर करते हैं। सो वी आर हियर फॉर श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद हम सबको प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, हम सबको अपनी किताबों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। और ये सब प्रिकॉशन रखने के बाद भी, सारी सावधानियां रखने के बाद भी, सारे एटिकेट्स को फॉलो करने के बाद भी, अच्छे साधक होने के बाद भी, यदि कुछ घट जाए, तो यही जो आज हमने श्लोक में चर्चा किया कि एक्सेप्ट इज अ डिजायर ऑफ कृष्णा फॉर अवर प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण के लिए। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, इतना इतना कुछ बच्चे थे उनके डर में, बहुत अच्छे से ध्यान रखा उनका, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया, एजुकेट किया, बाद में वो छोड़ के चले गए। तो कृष्ण की, उनको स्वीकार करो कि शायद कृष्ण चाहते हैं कि भाई तुम आसक्त मत हो जाओ, जो भी कृष्ण का प्लान है, एक्सेप्ट इट इज अ डिजायर ऑफ कृष्ण। तो उसमें क्या, हम भी प्रसन्न रहेंगे और हमारी सेवा भी चलती रहेगी, और कोई सेवाएं रोकने की आवश्यकता नहीं। हम कृष्ण की सेवा, माता जी ने शायद कहा था कि कई मंदिर जाने की कई बार इच्छा नहीं होती है, तो ऐसा नहीं करना है। हम सबको थोड़ा थोड़ा सबके सहयोग की तो आवश्यकता होती है, तो करना चाहिए। और आप नए लोगों को प्रीच करिए, एटलीस्ट जो आपके साथ घट रहा है, आप उनको इस तरीके से ट्रेंड करिए कि वो सेंसिटिव बने, वो मैच्योर बने, वो लोगों से इस तरीके से डील ना करें। अच्छी कम्युनिटी डेवलप होगी, आपके पास एक अच्छा 15-20 लोगों का ग्रुप होगा, जो आपको भी अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी की थॉट्स, किताबें आप शेयर कर सकते हैं आपस में। और आंदोलन में तो हम सब हैं, कोई अलग होने की तो बात ही नहीं। इसी नाव में बैठना, हमें इस नाव को छोड़ के कहीं नहीं जाना, बस प्रभुपाद जी हमारे कप्तान हैं, इसी नाव में बैठना है, इसी नाव में बैठ के यात्रा करनी। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके प्रभु, सो Okay, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. So thank you so much, Prabhuji, for question answer session also.
So we'll offer Vaishnava Pranam and conclude the session. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Thank you, Varun Prabhu, for giving me this service. Hare Krishna. Hare Krishna.